Let's allow all of the people. Okay, I have shared that blog link with you into the chat window, and now I'm going to share this so that you can start what we are going to do today. Uh, Today, what we are going to do, we are going to create, everyone in the class will create a blog for himself. I had some discussion with some concerned person. Then they have communicated this idea that it will become very difficult to go and check the Google Drive of each and every single student. It become really difficult. So blog is a solution to all such kind of things. Right? Vipin bhaiya. So blog is a solution to all this kind of things. तो अब आप सब अपना अपना ब्लॉग बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या नाम रखना है, वो सारा कुछ मैं आज एक बार आपको बता देती हूँ, सो दैट एवरीवन कैन स्टार्ट वर्किंग. एंड आपकी क्लास में आई विल स्टार्ट मेकिंग अ ब्लॉग फॉर मारिया, बिकॉज वी हैव एक्सचेंज द डिटेल्स वट एवर इज रिक्वायर्ड, राइट. सो कैसे ब्लॉग बनाना है, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट, और आपके जो 20 क्वेश्चंस है इस ब्लॉग के थ्रू रिफ्लेक्ट होंगे, right? So there's a form. Just click on this, submit the details of your blog for reviewing practical work. Everyone just click on this and you will be able to have this form in front of you. You all can see my screen. Yes. So fill up this form, submit it, then I will let you know how to create your blog. Just submit it. Wherever you find some difficulty, you can ask. I came to know that some students are not the student of PCTI, but still they are attending these classes. So if you are not the PCTI student, please mention no.
मैंने सर ब्लॉग लिंक भी तो लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? अभी बताती हूँ, पहले आप लिखो तो पहले इतना डिटेल डालो। अच्छा आप ये कह रहे हो कि पहले ब्लॉग लिंक ही बता दो, मतलब बनाना ही बता दो, उसके बाद। क्योंकि उसमें मैंडेटरी है, वो सबमिट ही नहीं होगा राइट बिना राइट उसके। राइट राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। तो मैं बता देती हूँ एक बार ब्लॉग बनाने का, आप इसको इस प्रोसेस के बाद स्टार्ट करना, राइट। अब ब्लॉग बनाने की अगर मैं यहाँ पर, तो ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है, बट मैम मैसेजेस में लिंक नहीं आ रही। मैसेजेस में लिंक नहीं आ रही। नो मैम, दिख ही नहीं रही। एक बंदे ने और डाला, प्लीज रीसेंड द लिंक। अच्छा मैं दोबारा डाल देती हम डायरेक्टली फॉर्म की लिंक डाल दीजिए। हूँ। हाँ आप फॉर्म की लिंक वाले टैब से फॉर्म कॉपी की करके लिंक पेस्ट कर पहले दीजिए। ब्लॉग बना लेते हैं ना, उसके बाद ही करना, नहीं तो सब अभी भरना शुरू कर देंगे, फिर से वो रीसबमिट होगा। एक बार आप समझ लेते हैं। अब हम ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास यहाँ से अभी सब देखो, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री ब्लॉग बनाना, फ्री ब्लॉग सर्विसेज अलाउड है। बट आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर ब्लॉगर, ये गूगल का है, राइट। आप बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं, इस पार्ट पे कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर ये अभी लाइव हो जाएगा, ये इस पे तो किया हुआ है तो एक्सपीरियंस भी है, बट एनीवे आप बना सकते हैं। तो अब मैं जाती हूँ गूगल पे, ब्लॉग स्पॉट लिखो या blogger.com करो, एक ही बात है। यहाँ से मुझे साइन इन करना होगा, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, मैं उसको फिल कर लेती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बस इस पे लॉग इन ही कर रही हूँ, और 1 मिनट के लिए मैं विंडो को पॉज दूंगी। Ma'am, we need to fill the registered email ID, phone number. यस यस, in the रजिस्टर्ड form. ईमेल आईडी, या यहाँ एक सेकंड, आ, 2 मिनट के लिए लॉग इन डिटेल डाल लेती हूँ पहले उसमें। यस, आप सबने अपने अपने एनरोलमेंट नंबर से बना रखी है, मैं भी वही डाल रही हूँ। Ma'am, your screen is not visible if you're sharing something. नो आई एम नॉट शेयरिंग राइट नाउ, कुछ लॉग इन कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू शो इट टू ऑल अदर पीपल। बस मैंने एक जीमेल आईडी से ही रजिस्टर किया और कुछ नहीं किया अभी तक। Okay, ma'am. Thank you. हाँ, अब करती हूँ मैं शेयर। यस, after what I did till now, I just go to Google, enter blogger.com or blogspot.com. Both are same. Just I have entered the Gmail ID and password of this Maria, one of your classmate, right? So now just a minute, it's working.
created the profile. Now here, once I have logged in with some Gmail ID, it is asking for the blog name. Now you all can see, choose a name for your blog. Although this blog name, because you can put any catchy name over here, but our requirement is to showcase our practical work. So you can put any name over here, right? So I'm putting like that will be displayed at the top of your blog. Okay. So let's go to domainwheel.com. एजुकेशनल और प्रैक्टिकल वर्क भी मैं डाल सकती हूँ. कुछ आइडिया निकाल रहे हैं बस कि कैसा अच्छा सा नाम रखूँ. आप इसमें से ये एक आइडिया है, बस आप अपना कुछ भी रख सकते हो वैसे. द ओनली थिंग इज कि इसके पास वो चीज अवेलेबल होना चाहिए. तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक आइडिया, मुझे ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है. प्रैक्टिकल हाइफन इग्नो, वर्किंग इग्नो, ये भी चल सकता है एक आइडिया निकालने के लिए बस. तो चलते हैं अभी उस पर ही. कल वर्क मारिए एक बार अपनी, आपका एनरोलमेंट नंबर यही है ना 2200 वाला? यस मारिया? यस मैम, यस. ओके, तो मैं वही रख देती हूँ और थोड़ा कैची बन जाएगा, मतलब हम रिलेट कर पाएंगे. मारिया 2200812920 2200812920. Right. So this is, I have selected as a name for your blog. Your initial name Maria and your enrollment number. No dot, no space, no hyphen. Although blog name can go up to 100 characters. It is written here. If you want to put IGNO, I can put it. Maria, what is your suggestion? How you want to relate your blog? Shall I put IGNO also, or it is sufficient? Yes, please add IGNO also. Okay. IGNO. Thank you. Next. I have just entered next. Now this web address is how people will find your blog. So let's Maria. यहाँ पर किसी को कोई चैलेंज भी नहीं आएगा क्योंकि सबका एनरोलमेंट नंबर डिफरेंट होगा. अदरवाइज यहाँ पे बहुत चैलेंज आता है. मेरा तो फटाफट यहाँ पर आ गया. नहीं तो वहीं पर वो वहीं रेस्ट्रिक्शन डाल देता. बट क्योंकि ये यूनिक कोड बना है, आपका नेम अलोंग विद योर एनरोलमेंट नंबर, सो यहाँ पर इस तरह का चैलेंज जहां तक है नहीं लाना चाहिए. अब वो कह रहा है हाउ द इट विल लुक लाइक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, राइट? तो यहाँ पर अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा. मारिया जोसेफ कर दूं आपका कंप्लीट? यस मैम. आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना. JOSEPH, यस. राइट? यस. ओके. यस. मारिया जोसेफ. ओके, लेट्स देखते हैं ये ले लेगा इसको. Just for the sake of equaling, I'm thinking it here.
Ma'am, is this blog specifically for software engineering lab, or can we use it for rest of For the rest of the entire MCA, you can use it for entire MCA for any task, because it will become really very difficult to go and check the Google Drive of each and every single student and check all the 20 questions of each of one of you. So once you have everything in the form of a blog, rather it's a kind of your digital copy or notebook, we can say, right? So whenever you will share it with someone, you can showcase your work. If you want to remove any file, it is always the control is in your hand, right? So now I'm going to finish it. Now you look at this, Maria. This is your Maria, your enrollment number, IGNO, right? Now Yes. I'm going to click on this view blog. Now you look at this. This is how the people will, let me share it with you. Yes. You all can refer it. Maria enrollment number. Right, try not to, when you are about to create it, don't put any hyphen, don't put any dot, because people will not remember it, right? So it will create complexity in the later part. Just by knowing the name, although it is an example, if you are fond of any specific character and anything, something is lucky for you, so you can put it. No challenge at this part. The only thing is your enrollment number must be there, because IGNO official will relate everything with your enrollment number only. But yes, if I will start the blog with enrollment number, then Maria, then again it will be it will not be so relatable. So that's why I have put up it here. Although you can here putting this format is not the thumb rule. The only thing is that everything should be in the form of a blog, so that if any person wants to look at this, their work, your work, or your performance during the class hour, or whatever you have done, so that is up to you, right? So this is how you can create your own blog, right? Now, if I want to change the theme, look and feel of this particular blog, you just go to the theme, choose the theme, whatever you like the most, right? मारिया कौन सा पसंद आ रहा है, मैं वही लगा देती हूँ, बाद में आप चेंज कर लेना बेशक से. आप क्लास के बाद अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. Okay, ma'am. Whichever, now you can choose whichever you want, ma'am. Okay. And now I'm considering this one, right? And I have selected it and then apply. If you want to have a preview of it, this thing, that how your blog will look like, it is reflecting in front of you, right? So now I'm going to apply it, just for the sake of your understanding, right? Now, because now I have applied the changes, now everything is in front of you. Now this is how the blog is created. Now because we have to answer 20 questions as per your practical exercise. So what you will do, because I'm telling you that you can use this single blog till your end of the MCA. So what you will do, I'm just recommending you, just go there. Add a new page. Let's say you want to use the same blog for another subject also. So otherwise the people to whom you want to showcase your work, they will get confused. Even you will also get confused. So it's better to keep one page for every single task, right? But for entire this software engineering, you make one page and put a different question in the form of different posts. Let me show you that thing also. So I'm going to create a page. Okay, plus, and now here I want to add the name of my web page under this particular blog. Let's say practical work for MCS
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक मिनट बस। हाँ, 2 चलने दो, ठीक है, मैं कर दूंगी। ओके, प्रैक्टिकल वर्क फॉर एमसीएस 217 MCSL है आपका। टू वन सेवन, just for the sake of understanding, software engineering, right? This is my first blog in software engineering. If you want to put any image, this entire toolbox is in front of you. You can put any video, any image you want to insert. Once you will just go the way you used to do other things. Just for the sake of your understanding, I'm let's say uh, if you require something, you can put it. Again, everything you all can see alignment is there. If you want to put it like this, or if you want to keep it at the center or at the right, like this, you can do it, right? And similarly, if you want to apply some sort of formatting over there, you want to change the format, font and the size, this one, you can do it as per your choice and requirement. If you want to move bold, italic, and all the formatting tools are available with you. And this is how you can insert any sort of hyperlink. You want to relate this particular, let's say, the way you normally insert any hyperlink, that is also available, right? That you will do. Now I'm imagining that whatever I want to put into this particular blog, that is done. Now just publish it. This will publish the page to your blog. Yes, confirm. Now I just want to see it, so you all can see it. Just go to this one and view the blog. Now look at this. This is not, something is not there. Okay, I have created a page, not the post, right? Now I want to publish a post or want to show my work through this. So what I need to do, I will just go here, go to the post, let's say plus question 1. Although you can, let's say I'm taking question 1, scope statement. ये उसी के अंदर ही डालती हूँ मैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। let's say page. Now this page is only for your software engineering work. So under this, I'm going to create different, post. This is question 1. What I can do, I can directly take the question number 1 from here. आप सबने देखा नहीं, मैंने कुछ कर रखा था यहाँ, ये ले लिया। इग्नो के उसमें से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया यहाँ, क्योंकि हम इसी काम को दिखाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, राइट? सो हियर यू आर अबाउट टू टाइप योर आंसर. Scope statement. और RRS आप जैसे मर्जी अपने इसको करो. Here you can showcase. Now I'm going to update it. Right. So the moment anyone will look at this,
they will get an idea. Although I haven't published it, here in this way you can showcase your work, or you can do it like this also. Just a minute, it's coming. Go to this. तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, एक मिनट, अच्छा ये एक बार देखें ये गूगल पे आ गया क्या? मारिया, क्या था, एनरोलमेंट नंबर को भूल गया, 2208 008 था कुछ, something like that. एक मिनट, दिखा तो नहीं रहा। नहीं बना है। हो सकता है 1 आध घंटे में ये हो जाए, वैसे दिखाता तो इमीडिएटली है ये। तो यही फीचर तो सही है, तो ये गूगल पे नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। एक कोई और करके देखो, उनका रिफ्लेक्ट हो रहा है गूगल पे, द वे आई हैव डन इट। No, हो रहा है? no, it's not reflecting. I tried. It's not possible. इट्स नॉट। It's not showing any result. नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ ये तो चलो नहीं, वो तो मैंने देख लिया, नहीं आ रहा है अभी, तो मैं देख लेती हूँ कहीं कुछ और पैरामीटर रह ना गया हो। आप लोग जैसे अभी मैंने एक मारिया वाली ईमेल आईडी से कॉन्फ़िगर किया पूरा ब्लॉग, कोई और भी करके देखो और मुझे बताना, फिर उसको एक बार गूगल पे देखते हैं कि कहीं क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका हो गया, गुड। आपका भी नहीं दिखा रहा, एक मिनट को। एक मिनट देख लेते हैं, होना तो नहीं चाहिए। ये लगता है उधर सबमिट नहीं हो पाया है। मारिया, एक बार अपने उस पर चेक करना, आपको कोई नोटिफिकेशन आई है? Okay. हाँ, एक बार चेक करना जरा। एक बार देखती हूँ कहीं Ma'am, can we choose any other platform apart from blogger.com for the blog? Yes, you can do it, no problem. The only thing is that they want that you should reflect your work by means of some
online mechanism. That's it. If anyone has its own website, and in that website you want to put it as your work, so that is also applicable. The only thing is it should be readily available to the officials. Just a minute. 2200. Especially in the free blog, platforms, the limitation is that we would not be able to create custom CSS and JavaScripts, Right. and that is required for the web design lab work. Because in the web designing lab work, we are required to create custom web pages and custom forms. So And let's that would see. not be. Yes, yes. I'm getting your point. But although wherever you find that you can use it, you'd use it. If you find that for doing that kind of work you need some other thing, so that trainer will let you know what to do or how to reflect that all these things, right? Well, that was my point, ma'am, because in that case, probably for each subject, we will have to create, different blogs or maybe use different kind of platforms to showcase the lab work. So a centralized Only approach that challenge will be on web designing part, as per my understanding. For rest of the Yes. things we can use this one only, right? Yes. So in that part, that trainer can better guide you that what they are looking for, how they will reflect their work and all, right? Okay. In this way you can do it. But पेज भी create हो जाना चाहिए था. अब एक सेकंड रुको. Let's go to Google. कुछ टाइम बाद वैसे ये तो एआई के मैकेनिज्म से चलता है. ये तो इमीडिएटली रिवर्ट आता है, मतलब रुकना नहीं चाहिए था ये. चलो anyway. I hope you get my idea. In this way, you keep on updating this blog as per the question assigned to you, and that single link you have to just share this URL with the concerned person who want to have a look on to your work. So this is the idea behind this thing, because it will become otherwise very difficult to check each and every blog or each and every student's Google Drive and 20 questions. So this is how you have to do it. You all got my question. So now, Maria, you have to put this link under that form that I'm asking for. Okay, ma'am, I'll do that. So now everyone is clear on this part? Yes? Yes, ma'am. So now I'm going to share. Just keep on doing that exercise. And here is the link of this particular form. You all can fill it. But before filling it, just create your own blog the way I have just shown you, right? And then only fill this form. So it's 2:45. I hope it will take 10 to 15 minutes. By 3 o'clock, everything will be on the same page.
right? And if some challenges are there, then I'm here. Just start doing, everyone. Use your official ID. Name could be anything. Please follow the same mechanism, right? Just do it. Ma'am, it can we choose? Are we a PCTI student or IGNO student? Who is not the PCTI student? Just type into the chat window. No, लिख दो And आप. how will we can we are Hmm? Now, when we say PCTI student, what does that actually mean? जिनका डेटाबेस हमारे पास है, आपके पास एक इग्नो से लेटर आया होगा आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस इज ओवर, जिसमें आपको बताया गया होगा कि दैट पीसीटीआई इज योर लर्निंग सेंटर. एलसी, Yes. एलसी, you must have received this information from through some mail or some other media. So Yes, if ma'am. you have received that yes, PCTI is your learning center, then you are a PCTI student. And if you have received that okay, Shamlal College or let's say Jamia or James or something other center, it means you are not the PCTI student. You just put up no in that particular form, right? So Okay, that ma'am. will give us an idea. And those who are saying no, just mention your enrollment number and put this data onto this ID, query@pctiltree.com, so that we can ensure that we must have the blog links of only those students who are PCTA student. Because I have to forward this entire form data to the IGNO officials. Right? Not now. I have been assigned a deadline for this thing by the end of this June. Right? Just everyone create your blog and then fill the form. Hello, excuse me, ma'am. Yes, Saurav? Yes. Actually, ma'am, I was going to ask that my learner center is written as Center for Online Education, so I don't really get Center for? online education. No, ये तो सभी का आया होगा. Study आप center. इसका स्क्रीनशॉट मेरी पर्सनल विंडो पे शेयर करो. Okay. हाँ, तो मैं एक बार चेक कर लूंगी ना कि ये तो सभी पे आया होगा. जो आपने लाइन बोली है ना, वो तो सभी पे आया होगा. आप एक बार वो मेरे को स्क्रीनशॉट. यस मैम, हमें भी सेम रिसीव हुआ है. कोई सेंटर का नाम नहीं आया? नहीं. ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट मेरे को कंफर्म करने दो. No, ma'am. I also have same अच्छा, center एक of मिनट, online. एक मिनट. no अच्छा, ma'am. ठीक है. लेट मी आस्क फ्रॉम कंसर्न पर्सन. मैं अभी फोन पे बात करके उनसे पूछती हूँ. फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वैसे तो हमारे पास डेटा है, पर कोई ना कोई पहले तो ऐसे होता था, एक लेटर आता था और उस पर स्टूडेंट के पास ये होता था कि आपका लर्निंग सेंटर सो एंड सो सेंटर है. एक मिनट, मुझे बात करने दो.
हेलो। हाँ, हो गई, क्लैरिटी मिल गई है। एक्चुअली नया सिस्टम है ना सभी के लिए, तो हर लेवल पे चैलेंज आ जाता है कि पहले क्लैरिफाई करो फिर बताओ, नहीं तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज और हम भी कंफ्यूज। अच्छा, क्या है आपका जो एमसीए ऑनलाइन का जो रीजनल सेंटर है वो RC2 है, मैं लिख भी देती हूँ। यस मैम, हमको 28 अप्रैल को एक मेल मिला था हाँ। जिसमें हमें इंडक्शन के लिए मेंशन था, उसमें रीजनल RC2 मेंशन है उसके अंदर, और नीचे हेल्प ईमेल में PCTIL मेंशन है उसके अंदर। अब मेरे को क्लैरिटी मिल गई ना कि पहले अलग जी। अलग होता था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबका आगे तक के लिए कम्युनिकेशन के लिए याद रखोगे, जब भी कोई पूछता है किसी भी लेवल पे, रीजनल सेंटर आपका 2 है एमसीए ऑनलाइन प्रोग्राम का। एमसीए ओल्ड की बात नहीं हो रही, वहां तो हम खैर बात ही नहीं करेंगे, हमारा तो मेन डोमेन यहीं पर ही है, एमसीए ऑनलाइन वाला, राइट। तो आपका RC2 है रीजनल सेंटर, और हर रीजनल सेंटर के अंडर में एक नोडल सेंटर आता है, और आपका नोडल सेंटर जो है वो है PCTI। और उन्होंने कहा ये वर्ड आप नोडल सेंटर वर्ड ही यूज करो, किसके कंटेक्स्ट में, एमसीए ऑनलाइन के कंटेक्स्ट में। यहाँ पर कोई लर्निंग, नोडल सेंटर के अंदर भी जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो PCTI ही है। तो मैम हम लोग PCTI स्टूडेंट हैं या नहीं है? आप PCTI के ही बच्चे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ही नोडल सेंटर है अभी पूरे मतलब इंडिया में, तो और उसके एमसीए ऑनलाइन के लिए PCTI ही आपका नोडल सेंटर है, PCTI आपका सर्विस प्रोवाइडर है, और RC2 आपका रीजनल सेंटर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके, थैंक्स मैम। एग्जाम फॉर्म निकले हैं मैम। हाँ, वो आपका जो पोर्टल है एक बार फिर से देखो, यहाँ पर दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये रहा ना आपका, ये जो पहला लिंक है ना, ये आपके लिए बनाया है। इस पोर्टल का जन्म ही आपको सपोर्ट देने के लिए हुआ है, तो इसी पोर्टल पे जाओ, जो कम्युनिकेशन होगी वो आपकी यहीं से होगी। आपको जो देखना है, कोई अपडेशन है, कुछ भी है, वो सब यहीं से आपका ऑपरेट होगा, आपको तो कहीं नहीं जाना है। मैम बेसिकली वी हैव अ डाउट, तो हम लोगों को ना एग्जाम फॉर्म भरने में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे लाइक हमारे एग्जाम कैसे होंगे, और 25 आई थिंक लास्ट डेट है, और अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो कैन यू प्लीज हेल्प मी ऑन दैट? हाँ हाँ, पूछो ना, क्वेश्चन बताओ, मैं अभी फोन कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी ये वाला सिस्टम बिल्कुल नया है, हम भी नहीं फेमिलियर है, आपकी तरह हमें भी बहुत जगह पे डाउट्स हैं, कहाँ हम स्टूडेंट को कैसे से पुराने सिस्टम के हिसाब से बताएं, नए सिस्टम से हम खुद फेमिलियर नहीं हुए अभी पूरी तरह से। तो मैम बेसिकली डाउट ये है कि एग्जाम कैसे होंगे, और एग्जाम सेंटर वगैरह क्या मतलब MCA न्यू की तरह होंगे या क्या होगा, ये बता करना है। आपका ये पार्ट मेरे को पता है, क्योंकि ये मैं उस मीटिंग का पार्ट थी, तो मुझे क्लैरिटी मिल गई थी। एमसीए ऑनलाइन का एग्जाम जो है वो आपका एक जैसे एग्जाम सेंटर डलता है ऑफलाइन एग्जामों का, ऐसे ही आपका ऑनलाइन मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन ही रहेगा, बट आपका सेंटर, जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि आपका नोडल सेंटर PCTI है, तो आपका एग्जाम सेंटर PCTI नहीं डलेगा, इसके अलावा कहीं भी डलेगा। वहां पर आप जाओगे, वहां पर आपको कंप्यूटर मिलेगा, वहीं पर आपका ऑनलाइन एग्जाम आएगा, डेस्कटॉप पे जो एक शॉर्टकट की फॉर्म में आता है वो आएगा, उसको ओपन करने पर वो भी एक टाइम के हिसाब से खुलता है, और उसके बाद आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड अपने एग्जाम को सबमिट कर देना है, और आपका एग्जाम जो है वो दोनों टाइप का मिक्स आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट भी आएगा और राइटिंग पार्ट भी आएगा ऑफलाइन की तरह। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कितने परसेंट, अगर मैं कहूँ 100 में से आप पूछना चाहो कि कितने परसेंट आएगा, होपफुली 40% हमें जो डिस्कशन हो रही है, जिस तरह से बातचीत हो रही है, लग रहा है कि 40-60 का रेशो रहेगा। 40 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 60 आपका ऑफलाइन जैसे हम नॉर्मल करते हैं, पर वो कहीं पर भी शीटें वगैरह नहीं मिलेगी, जो भी होगा आपको ऑनलाइन मोड में ही करना होगा, टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर पे। टाइप करना होगा, बिल्कुल टाइप करना होगा। एग्जाम कब होंगे, कब जो डेट MCA न्यू वालों के लिए आई है तभी होंगे? हाँ हाँ, उसी हिसाब से आई थिंक आपका 6 अगस्त से स्टार्ट है, ऐसे ही है ना शायद।
एक्चुअली बहुत सारी चीजें चल रही लास्ट ईयर जुलाई से थे मैम। अभी एग्जाम फॉर्म के लिए लाइक ऑप्शन ही नहीं है MCOL वालों के लिए। हैं। कोई बात नहीं, आप अपने इसी पोर्टल पे जाते बीच बीच में देखते रहो, जो भी है वो इसी के थ्रू कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये भी अभी देखो चीजें चल रही हैं, अभी ये भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, बट ठीक है जैसे भी है आपको यहीं से कम्युनिकेट करना है। इसलिए मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी ईमेल आईडी है जो आपको बार बार जरूरत पड़ सकती है, सबसे ऊपर सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वाली डाली है। और भी आपको जो जो चीजें चाहिए इनके इसके आप यहाँ पर ये इसके साथ लिंक हो जाइए ना, आप इसको टैग कर लीजिए इस वाले लिंक को फेसबुक और ट्विटर पे। यहाँ पे इनकी बड़ी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आती रहती है, तो आप यहाँ से सारा नोट करके अपने ब्लॉग पे बेशक से लगा लो, ताकि आपको वहीं से कम्युनिकेट होगा। नहीं तो अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम जहाँ भी आप स्टोर करना चाहो करते रहो, एक बार क्लिक कर दोगे तो आप कनेक्टेड हो ही जाओगे। ठीक है, तो वो वाला डाउट सबका निकल गया ना, कैसा एग्जाम होगा। एग्जाम फिल करने में कोई दिक्कत आ रही थी लास्ट क्लास में, वो रिजॉल्व हुई या नहीं? और यार जिसने ये वाला कर दिया है मैं देख लूं डेटा, ये वाला मैं खैर शाम को ही चेक करूंगी, अभी तो नहीं कर पाती। और किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आप अपना ये ब्लॉग बना लो और उसका लिंक यहीं चैट विंडो पे शेयर कर लो। मैं भी एक बार चेक कर लूंगी, और मैं वो देखती हूँ मारिया का गूगल पे क्यों नहीं आ रहा। चाहिए अच्छा ठीक है। प्रज्वल थोड़ा इसका थीम वीम चेंज करके थोड़ा ब्यूटीफाई कर दो, बस इसको मेकअप कर दो थोड़ा सा इसका, बाकी ठीक ही है। आप एक पोस्ट बना के डालो, स्कोप स्टेटमेंट आपकी रेलवे रिजर्वेशन वाला पहला क्वेश्चन बना डालो। सब जिसका ब्लॉग बनता जा रहा है अपना फॉर्म फिलअप करके आप राजश्री यहाँ पर शेयर करो मेरे को, नहीं तो आपको मेरे को मेरी पर्सनल विंडो पे वो जीमेल आईडी पासवर्ड देना होगा, मैं तभी चेक करके बता पाऊंगी। बाद में चेंज कर लेना, यही कर सकते हैं आप। शिवम का भी देख रहे थे। राजश्री आप कैसे जैसे कंफर्टेबल लगो वैसे दे दो। मैं अपना नंबर शेयर कर देती हूँ, इस पे डालना है, इस पे डाल के बताओ जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मेरी पर्सनल विंडो पे डालो राजश्री। मैं देख रही हूँ शिवम का किसका खोला है मैंने अभी। शिवम का तो देख लिया था मैंने, एक और आया था ना अभी, प्रज्वल और शिवम का एक जैसा सा लग रहा है क्योंकि वो थीम चेंज नहीं हुआ ना अभी। हाँ शिवम प्रज्वल। बस अब आप अंदर जाकर अपना एक पेज बनाना है या पोस्ट की फॉर्म में डालना है, ये आपकी चॉइस है। मैं तो रिकमेंड करूंगी एक पेज बना के उसी के नीचे क्वेश्चन 1 2 3 डाल दो। पोस्ट बनाओगे तो खैर अलग अलग होगा, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी। पेज इज मोर रिकमेंडेड। जिसका होता जा रहा है मुझे दिखाते जाओ जरा चैट विंडो पे लिख के अपना। तरुण सिन्हा का भी बन गया है, मैं देख लेती हूँ। यस परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है मैम। इसमें जो जो क्वेश्चंस करने हैं एक बार वो भी बता दीजिए। यार वो यहाँ पे दिए हुआ बेटा, चलो मैं दे रही हूँ मैम। उनका सॉल्यूशंस वगैरह डिस्कस कर लें तो। सोल्यूशन वगैरह हमने देखा नहीं, मैंने सबके लिए एक सोल्यूशन रखा हुआ, बट नो वन हैज चेक्ड इट आउट। बट एनीवे दिखा रही हूँ। आपका पहला क्वेश्चन था 13। Suppose that you need to build the software for a railway reservation system. Write a statement of scope that describe the this one. ये मैंने आंसर लिख रखा है। आप इसको मोल्ड भी कर सकते हो, एज इट इज भी लिख सकते हो, बट हाँ सबका थोड़ा सा तो चेंज होना चाहिए ना, सेम सबका हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। देखो कैसे क्या क्वेश्चन था और कैसे आंसर दिया। ऐसे ऐसे आप
इसी पेज के नीचे अपने 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर डालते जाओ। 19 बचे ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है आपका, यही टॉपिक पे दूसरे कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, आप कुछ और भी थोड़ा सा मोल्ड करके चेंज करके इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ये एक कंसेप्ट है, आप देखो एक बार पढ़ो, पहले समझो, फिर बताना। और अब आपको ईआर डायग्राम भी बनाना आता है, डीएफडी भी बनानी आती है, तो यू कैन स्टार्ट। अपडेट कर लो, एज इट इज नहीं चलेगा, वो तो दिख जाएगा। फिर मैं भी अपना ब्लॉग दूंगी उनको कि मैंने पढ़ाते समय ये दिया था, है ना। किसी का आया, एक मिनट चेक करती हूँ मैं। You all keep on sharing your work through chat window. I am looking at this one by one.
राजश्री हुआ है, मैंने चेक कर लिया है, आपका अभी क्रिएट नहीं हुआ है। आपका मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ यहाँ पर, एक मिनट। यहाँ पर देखो आप, यहाँ देखो अभी आपका ना, नहीं ये तो मारिया का खुल गया। एक मिनट को, मारिया के साथ ही मैंने इस पे रखा था, मारिया का गया। एक मिनट, जो देख चुके हैं उसको हटा रही हूँ, एक मिनट। आपका मैंने भी चेक किया है। हाँ यहाँ पर देखो, ये देखो आपका राजश्री, ये अभी आपका ब्लॉग क्रिएट नहीं हुआ है। आप अपने अकाउंट में जा चुके हैं, जो 9 डॉट्स है ना, इसी के अंदर आपको आपका ब्लॉगिंग वाला ब्लॉग पेज मिलेगा, उसी के अंदर आप जाके यहाँ पे टाइटल डालो अपना एनरोलमेंट नंबर और वो सब, ठीक है। अभी आपका क्रिएटेड नहीं हुआ है। अच्छा, अब मैं बाकियों का जिन्होंने शेयर किया उनका चेक कर लेती हूँ। आप एक बार करो राजश्री, अब मैं एक मिनट देखती हूँ, कहीं कहीं आए हैं। चंदा का भी आ गया है। गुड, नाइस। सनी एंड प्रखर, सनी, ठीक है। प्रखर का और चेक कर लेती हूँ, आई थिंक कर लिया था। ठीक है, तो आप अपने अपने वो शीट में डेटा डाल दीजिए जिनका बनता जा रहा है। विष्णु का, महेश का शायद नहीं देखा ना मैंने। हो सकता है 2-4 घंटे का भी, वैसे इसकी होती तो इमीडिएटली, मैं ये भी बात नहीं मान सकती, पर सबका ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और है निकिता कालिया, ठीक है। निकिता और मारिया का सेम सेम हो गया, बट ठीक है, बाद में वो तो कंटेंट से डिफरेंशिएट हो ही रहा है। जयेश और ऋतिक, इग्नो कर ले यार, लोगों को जहाँ ठीक लगे लगाते रहो, थोड़ा सजा दो उसको, अच्छा सा बना दो, लगना चाहिए, फील आनी चाहिए कि इग्नो के स्टूडेंट ने इग्नो को कोई अपना एफर्ट दिखा रहे हो। वैसे तो इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, खैर, मतलब इस लोगो लगाने की क्लैरिटी रहनी चाहिए ना, बट दे विल फील मोर कनेक्टेड। अच्छा, और था जयेश का, अपने अपने प्रोफाइल भी अपडेट कर दो, जो ऑप्टिमाइजेशन करना है करते रहो उसको। अखिल का तो देख लिया था, नील का नहीं देखा शायद।
Sunny. Good. Himani. Good. Shalu. Saurav. Yes, Saurav. Ma'am, actually, I have a question about the blog profile name. Actually, I logged in with Blogger some time ago, and I created it another name. So now I can change. So If I'm you asking that. already have it, no problem at all. I'm saying that if you already have that blog with Blogspot or Blogger.com, then no need to recreate it again. No problem at all. You Yeah, no, have some I'm just platform asking. to showcase to the concerned person. That's it. I told you that if you have your own website and in that website you want, if you want to have your own blog, you can show it. The only idea is to add flexibility in looking at this work. That's it. Yeah, no, I was just asking, is the blogger profile name somewhat relevant or what? No, not so. Not so. All It's right, not so. Not so. all right, thanks. If you don't want to share your contact number and other thing, then it's up to you. It's totally your. It's totally up to you. Uh, okay, thanks, ma'am. Right. Good. Premjit, we will have to create it with a new email ID. Fine. Yeah, Rajshri, now it is created. Now it is created. Yes, ma'am. महेश देख लिया था मैंने इसको.
महेश लिंक शेयर करो. Madam, I have shared the link with the IGNOU enrollment number only. Is it okay? No, it's okay, no problem at all. I have inserted, prefixes the name just to feel more connected, and it recall value should be high. That's it. This was the only idea. But if it is accepting with your enrollment number, it's okay. Can we change it now? Is it allowed or not? Yeah, it's allowed. So, Your enrollment number really matters a lot. no, We will just not compromise. Yeah, we will not compromise on that part. Can I change it? What you want to put now? Just I want to put my name because I created it. Okay. Then you have to recreate, na? But Okay. in a single ID, Yeah. you won't be able to reconfigure it. You won't be able to. You have to take a fresh ID, then it will allow you. है ना? Otherwise, this may be deleted. No. You can you don't use it when some communication happens. You just use the only one that you want that people should refer it. Right. Shashi. Ma'am, hello. Yes. Ma'am, I found some Excel sheet 2 days back. Where What? we have What you find? that some link was there where some Excel sheet is coming for Google form to declare. It was related to placement drive. No. It was something that we have to declare our project using which software we are doing this kind of sheet was there. From where you have get it? Okay, maybe you were not the part of last class. Yes. You was the part of last class because initially. Yes, ma'am, please. Actually, initially, I have started this practice in the last class, but then I discussed with the concerned person. He told me that it will become really very difficult to track the thing. So better to have the blog of each and every student, whatever communication we want to have or student want to showcase rather. So just by sharing a single link, the things will become more apparent, more transparent. So that's why this new practice is applied. So whatever data you have put up into that the Google sheet, so that can be used when the final project will be done. And there is no mini project in your case. Only the major project is there in your case, and it is an individual project. No community or group work is allowed into this, right? Yeah, ma'am. Ma'am, I'm very new to this software engineering and basically I'm mechanical engineer and financial background as well. But Okay. I'm working on software where I have to work on SQL and this Oracle system. So can I take a project to generate this invoice kind of thing, invoicing system? Anything which is serving to the industry, any real time, your project will be totally, different from all other people because it is you will develop it to fulfill the need of some company or some organization. So it is better. It's better. But That's yes,
I really working on. But that data I can't use in this public domain. That for what you may please guide me what should be done. Actually, I'm working on this Oracle forms, GSP, all those things. So your question is basically that you are creating a project to serve to the Tata organization. So can No, you no. or Say. May yeah. please. So you want to just ensure this thing, okay, whatever software you have developed for the sake of the company, can you use the same thing for the as your project one also? This is your question? No, it is not my question. I can't, because the data is very sensitive, so I can't use that data. Or it is not ethical also. Exactly. Very true. You may guide me that where, because I'm readily database is available, auditors are available, everything is available. Just I'm creating this whole piece and application. Although your point is very genuine, very valid also, that ethically it is not, correct to take the anyone's company project for your academic, eligibility and this kind of activity. But yes, there is a form which was earlier into the old MCA type, in which there was a separate form in which you need to get it signed by your concerned authority, and if they don't have any sort of challenge on that part, that okay, he is my employee and if he want to serve this project which is totally going on under the supervision of yours, and you want to showcase it as your academic effort to some organization or some university, then it is okay. But it should be onto the letterhead and onto the that prescribed format basically. NOC kind of thing, huh? Yeah, you can say yes, no objection kind of, yes. So that was there, that provision was there into the earlier format of MCA. But in case of online MCA, because the entire format is going to be changed, so I need to confirm. As per my understanding, there should not be any objection on this part. Is itself writing on this part that okay, we don't have any challenge to if my one of the employees taking it or reflecting it as a effort of their academic activities and all. As per my understanding, there should not be any objection on that part. But still, rules are rule. What the university think, what is their thinking horizon, we can't interrupt onto that part. So I will keep this question in mind, and hopefully by Tuesday we are having a meeting with them. So I will raise the question and I will get the answer, and then only I can communicate it to you. Right? Okay, ma'am. Okay. That I can do. Thank you very much. Thank you. Ma'am, one question. Yes. One question. I have done a blog, created blogger link, but the enrollment number somehow made wrong. So how can I correct it? अब तो ये एक्सेप्ट कर लिया इसने, अब आपको क्या मैम फ्रॉम सेटिंग्स वी कैन चेंज द नेम ऑफ द यूआरएल. वहाँ पे भी एक ऑप्शन है, यस. प्रोफाइल में भी, प्रोफाइल में तो प्रोफाइल की सेटिंग चेंज होगी, राइट. वहाँ से यूआरएल हम चेंज कर सकते हैं. हाँ, सेटिंग्स में है, एग्जैक्टली है. सेटिंग में मैं गया था मैम, लेकिन उसमें कहाँ पे है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि ब्लॉगर जो लिंक है उसके आगे में कोई एडिट का नीचे, जहाँ नीचे बिल्कुल लास्ट में वो जो एक कीज बनी होती है ना, जैसे हमारे सबके मोबाइल में वो सिंबल होता है, उस टाइप का व्यू ब्लॉक के नीचे है. व्यू ब्लॉक के नीचे है. ओके, व्यू ब्लॉक के नीचे. लेट मी. हाँ, बिल्कुल वहाँ पर सेटिंग्स का, या शायद उससे ऊपर ना हो, देख लो एक बार. सेटिंग्स व्यू ब्लॉक के ऊपर में सेटिंग है. हाँ, वहीं कहीं आसपास ही है, नीचे ही करके वहाँ सेटिंग में जाकर आप करो. नो मैम, इसमें blogger.com पे जाके वहां से चेंज होगा, ये ब्लॉग से नहीं. मैं एक बार देख लेता हूँ. हाँ, इसमें पहले तो ये करना ही नहीं देता था, पहले तो हमें ये करना ही नहीं देता था. अब तो सेटिंग में ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब 7-8 महीने हो गए हैं. तो पहले तो क्योंकि ये डोमेन लेवल की वेरिफिकेशन करता था, तो हमें चेंज करना ही नहीं देता था. तो अब हो रहा है ये, मतलब पिछले 7-8 महीने से ये चेंज आया, तो हम कर पाते हैं. केएस नहीं, मैं ये मुझे नहीं दिख रहा है इसमें एडिट का. अच्छा, you won't get the option of edit. Just click on the name which you want to edit. करके देखो एक बार.
choose a name for your blog. What should be I there? am in setting and When you scroll down your user, your name, and then your email ID, everything will be flashed. And whatever you want to make any change into it, you can do that. Hello, ma'am. Yes, yes. Choose a name for your blog. What should be there? Your name and enrollment number. And address? Address, you can leave it. If you want to put it, you can put it. Your reference point should be your enrollment number. And just for the sake of, usability, I have inserted that name also. Okay. Just for the sake of reference only. Oh. now I have saved and yes, it Yes, yes, yes. changed. What? Yeah. Okay, okay. Thanks, everybody. Ma'am, what you have shared the submit form, how this type of form create, and that means how we can create it. Okay. Just go to these 9 dots, right? And then Okay. this, there's a form option. Here. Under these 9 dot, form option is there. You can choose the form of your choice. Like I have selected this blank form and all. Then it will ask you the kind of things that you want to put up. So just keep on typing this thing. Anything you want to be required, keep it like this. Once it is done, you can share the link. This is how it is being done. Okay, and the information is stored in Excel form. Yes. Once you go to this responses, there's an Excel sheet that will be created. So whatever data you are just sharing me, I'll just download it and will share with the IGNO officials.
Okay, and the multiple instances are allowed, right? That means अगर 10 लोग एक साथ ही इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो वो एक साथ ही उस पे ऐड हो जाएगा एक्सेल में. I got connected. Yes. So I hope you got the answer. Yeah, ma'am. Okay, okay. So let's take the attendance now. Keep everyone your video to be on. By next class, everyone should have that first question to be updated and start doing second question also. Right? Done. Attendance is done. Thank you, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Class over? No, class is still going on. Some people are still doing. I haven't get all the 60 plus answers or blog links. Still, people, I think they are trying. So I will stay connected. Class is not yet over. मैम वो ब्लॉग में आपके क्वेश्चन का आंसर ऐड करना है, राइट? जो आपने जी जी क्वेश्चन जी. दिखा है. और सेकंड, ये तो मैंने आज बता ही दिया, जस्ट टू स्टिमुलेट करने के लिए कि एक बार स्टार्टिंग तो हो जाए. एक बार वो क्या बोलते हैं हम हिंदी में, नारियल तो फोड़ना मतलब लग जाना चाहिए ना, स्टार्ट हो जाना चाहिए. सो वंस द टास्क विल बी इनिशिएटेड देन द फर्दर पार्ट कैन बी डन. And I think from next class onward, our number of classes are going to increase again, to my understanding. So let's see, no problem. So we will do it. So by next class, this first question was the homework is this week only, and second question is the homework for next week, for the coming week rather, right? मैम ऐसा नहीं होना चाहिए था जिससे कि हमारी सारी क्लासेस खत्म हो जाए उसके बाद हम असाइनमेंट डालते, क्योंकि क्लासेस खत्म होने के बाद ही हम थोड़ा समझ पाते हैं कि कैसे क्या करना हो. तो अब क्लास आवर्स में आप बताओ क्या करोगे फिर? ये जो इतना टाइम हमें मिला है, इसी काम के लिए मिला है, क्योंकि आप सबका शेड्यूल क्या है, आप कैसे मतलब इतने सारा लोड ले पा रहे हो या कुछ भी, आपके पास टाइम नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं. सो व्हाई नॉट टू डू इन दिस अवेलेबल टाइम पीरियड. सो वो वाला टाइम, इस टाइम में आप सजेस्ट करो क्या करना चाहिए. मैं मीटिंग में ये पॉइंट रख के अप्रूवल ले लूंगी, आप मुझे पॉइंट बताओ. देन व्हाट इज द, आप देखो नेक्स्ट क्लास से हमारा जो नंबर्स ऑफ आवर्स है प्रैक्टिकल क्लास के, वो 4 आवर्स हो जाएंगे. 2 to 6 o'clock तक हमारी क्लासेस आपस में है, राइट? तो फिर उस वाले समय का यूटिलाइजेशन हम कहाँ करेंगे? आप मुझे आइडिया दे दो, मैं मीटिंग और ट्यूसडे वाली मीटिंग में आपका आइडिया पुटअप कर दूंगी, और अगर अप्रूव हो गया तो दोनों का भला है.
आप मुझे बताओ कि क्या करेंगे फिर इस वाले टाइम में, अगर ये वाला काम अभी नहीं कर पाएंगे तो। मैम मतलब जो बाकी 20 क्वेश्चन है जो आप कह रहे हो उन्हें सॉल्व करना है, 19 उन्हें समझ सकते हैं हम। 19 बचे हैं, 19 बचे हैं हम, है ना। हाँ तो 19 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली लैब में टाइम कम मिलेगा, हाँ, तो सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। अपनी पेस पे करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे अभी जून तक तो आपकी वो लिंक शेयर करने हैं जो आप सबने दिया। अभी देखती हूँ मैं डेटा कैप्चर करके, आउट ऑफ मतलब 60 कितने आए हैं, मोर देन 60 रादर होने चाहिए, कितने रिसीव हुए हैं, वो डेटा शीट मेरे पास आ जाएगी। और जो है नेक्स्ट जो है ना, फिर आपके 20 क्वेश्चन का रिव्यू होगा, और ये सारा काम करा के रिव्यू करके मुझे 40 में से आपकी मार्किंग करके वो शीट भी इग्नो को सबमिट करानी है। आप हमारा कंटेक्ट समझो ना, फिर आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर हम भी वहां बिजी हो जाएंगे, है ना। तो सारी एक्सरसाइज विद इन द दिस क्रेडिट लिमिट में हमें खत्म करना है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, अभी भी जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मैं 5 मिनट के लिए आउट हो जाती हूँ क्लास से, आपस में आप बात करो, मुझे कोई आइडिया दो जो मैं आपके बिहाफ पे पुट अप कर सकूं ट्यूसडे वाली मीटिंग में, कि अगर ये अभी नहीं करोगे, ज्यादा तो लोड दे ही नहीं रहे ना। 20 क्वेश्चन में से कुछ एक चीजें तो बहुत ही जैसे लास्ट क्वेश्चन ही आपने देखा, उन्होंने कहा अपने लाइब्रेरी के लिए अगर कुछ बनाना है तो आप विजिट कीजिए लाइब्रेरी के और अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को निकाल के लाओ। तो ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से बैठोगे, हाफ एन आवर में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करके भी आप लिख पाओगे। मैडम। हाँ जी। हाँ मैडम, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश मैडम। Okay. Okay. Sorry, it's difficult to understand, madam. What are you teaching? Sorry. It's okay. The idea is, now some of the student was saying that not to give us some sort of deadline, we will just finish our assignment submission work by the end of 15th of June. We will submit. We have already, some of you have already submit the blog link and all. Then whatever task I'm asking for, or these 20 question, the student want that they should be allowed to submit this task by the end of July. So my question in response to your query is that, give me some ideas then what to do in these allotted hours which the university has assigned us. From next class onwards, by the end of July, we will be having 4-hour practical classes with you. I'm having that 4-hour practical classes with you. Then what we are supposed to do under these classes? These hours are practical hours are assigned to fulfill these practical exercises only. If you don't want to do it, that work during these classes, then what to do in these classes? What ideas are there? You just give me your ideas. I will put it into the meeting which is supposed to be held in the coming Tuesday along with the IGNO officials. So I will put that suggestion on your behalf, that can we do it like this? If they will allow us to do it, I will be happy more than you. And if not, then what to do in these classes? You just give me that idea. You are getting the point now? Understood, madam. Thank you. Then tell me. Tuesday, hopefully, we are going to have a meeting on this regarding your operational concern and everything like this. So if you have some better ideas, you can communicate your ideas here, or when it comes, then you can tell by next class also. Then I will put it. Hopefully, in tomorrow class, Mr. Akshay Kumar, who is the head of MC Online, he will visit to most of the online classes, IGNO online classes. So I have also kept this question also in my mind to raise during the interaction and all. If you have some better ideas, if not now, then when? Then what is the use of having these 4-hour practical classes? What we are supposed to do during that classes then? To give a thought to this thing, if something clicks to your mind, just share it with me so that I can communicate at the right channel. Maybe because on Monday we are having placement drive in PCTI itself, so hopefully the top IGNO officials will also visit to the PCTI. Maybe we will have a kind of interaction on your part also. Maybe it's not 100%, but
if meeting will be held, then maybe the queries can be raised. So if you have some idea, you can share it so that I can also put up on your behalf. I will not name the any student. Rather, it will be raised as a concern only. So if they will, approve this kind of thing, so we don't have any, challenge on that part. We are ready. We are with you. We are with you. Within your blog is not working. Just go to the 9 dots and enter in your blog and then create these 9 dots. Thank you so much. मैं रख दें इन पर. Okay.